हेलो जी, आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्को इंफ्रा फंड के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट इन्वेस्को इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, हाउ दिस फंड इज गिविंग गुड रिटर्न्स, हाउ इज इट आउट परफॉर्मिंग इट्स पियर्स इन दिस सेक्टर, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके एग्जिट एंट्री लोड्स हैं तो क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, इस फंड की एलोकेशन क्या है, टॉप होल्डिंग्स क्या है, और एट द एंड ऑफ द video we will see if as an investor it makes sense for you to enter into this fund or not, wholly because it is a theme based fund and it invests in the growing infrastructure play in our country. So let's begin the video. Just before starting the video, I'd like to inform that I am not a SEBI registered investor advisor. For all your investment purpose needs, kindly meet an RIA. This video is made solely for the purpose of education. So Invesco Infrastructure Fund Review, one of the better run funds but not the best. So let's see if I can help drive the point home at the end of the video for my viewers. So in Invesco Infrastructure Fund, as the name suggests, is a theme-based fund and it invests in the infrastructure play currently going on in our country. Invesco Infrastructure Fund belongs to the Invesco AMC, which has been around 17 years in our country so far. तो ये भी एक हमने और काफी एक सीरीज किया है on infrastructure mutual funds in our country. Why? Because India में अभी infrastructure market बड़ा hot हो रखा है. आप देखो इंडिया में is a developing nation and it has a huge requirement for growing facilities for its citizens. कैसे? क्योंकि देखिए आप हमको इंडिया में we need so many roads, there is so much development. अगर हम हमारी जो रूरल स्टोरी है, हमारे tier 2 टाउन्स है, सब डेवलपमेंट की ओर बढ़ चले हैं and we are trying to connect the whole city, whole country as one. क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसमें मेनली क्या आ जाता है? We can talk about the roadways of our country, we can talk about the expressways, we can talk about the underpasses, we can talk about the huge energy projects in the form of renewable energy projects like solar or wind energy, also stored एनर्जी स्टोरेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और इन सब के लिए अगर हमको अपना रिन्यूएबल एनर्जी का फोर्थ स्ट्रॉन्ग करना है तो वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन द एग्जिस्टिंग पावर ग्रिड लाइंस. जो हमारे ग्रिड स्ट्रक्चर है अगर वो सॉलिड नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, सो वी विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट द होल ट्रांजिशन इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस. व्हाई? बिकॉज इट इज इंटरमिटेंट इन नेचर. सो वी नीड, जब एनर्जी जनरेशन होती है सुबह के टाइम या when there is good wind conditions for solar or wind respectively, then we also need to store that energy so that we can use it later for हमारे आगे के यूसेज के लिए हम उसको बाद में यूटिलाइज कर सके. तो उसके लिए हमको एनर्जी स्टोरेज पे भी फोकस करना है. तो काफी हमारे कंट्री में ये सब काम हो रहा है. अभी आप देखिए वंदे भारत एक्सप्रेसवेज बन गए हैं, इतने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं लाइक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवेज. तो देयर इज अ ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी इन आवर कंट्री एंड सो व्हाई नॉट वी एज इन्वेस्टर्स मेक द मोस्ट ऑफ इट. We can invest in such funds and we can make a selection out of the existing funds to find out the best run funds for us to invest. हमारी जैसी इन्वेस्टमेंट एपेटाइट है, हमारी जैसी रिस्क लेने की क्षमता है, हमारे जो रिटर्न्स की वी हैव द रिक्वायरमेंट. सो इफ ऑल दीज वी कैन चूज फ्रॉम दीज लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रा फंड्स, वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. बिकॉज एवरीबडी सेज कि यू शुड बोर्ड द ट्रेन. ऐसा नहीं हो कि हमने वो बस फिर से मिस कर दी हो. सो अगर हम सुनते हैं आगे सबके, वी हैव heard of people saying and we have also read articles, listened to videos saying कि अगर आपने तब इस शेयर में इतने पैसे डाले होते तो आज आपको इतना गुना वो पैसा मिल गया होता, इतना 100x हो गया होता, डबल हो गया होता, ये हो गया. Then we as investor we are thinking how did we miss that bus? हम लोग क्यों नहीं तब ये बत्ती जली हमारे दिमाग में. तो इसी तरह अगर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट इज रियली हॉट and if we want we can make the most of it. So let's begin the video. Let's start off talking about Invesco Infrastructure Fund. The Invesco Infrastructure Fund belongs to the Invesco AMC and it has been around in our country for the last 17 years. अगर हम बात करें कि इन्वेस्को इंफ्रास्ट्रक्चर की तो परफॉर्मेंस देखें इस फंड का तो विच इज रियली गुड. द रिटर्न्स हैव बीन रियली गुड इन ईच ऑफ द लास्ट 1 year, 3 years और 10 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस. लेकिन this is nothing, this will not make the fund stand out in your eyes, I'm sure, because there are a lot of infrastructure funds giving good returns, giving better returns. Why? Because अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इतना बूम है कि ओवरऑल हमारे सारे स्टॉक्स में काफी उछाल है. जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस सेक्टर्स है, सब सेक्टर्स हैं, लाइक कैपिटल गुड्स हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एनर्जी हो गया, मटीरियल्स हो गया, which are the generally the top holdings of such funds, they have been doing pretty well. Why? Because इतनी जो हमारे देश में मांग है तो ये
who are catering to it? Given India's Make in India, Atmanirbhar Bharat, most of the contracts, most of the sales are towards these companies who are benefiting, who are profiting out of the huge spends by the government in this area. तो इसका मतलब जो ये funds हैं जिन्होंने ये स्टॉक्स को अपने होल्डिंग्स में रखा है, they will automatically benefit out of it. तो अगर हम बात करें इन्वेस्को इंफ्रास्ट्रक्चर के रिटर्न्स के बारे में, तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने अराउंड 25% की रिटर्न्स दी थी, 25% इन द लास्ट ईयर, 32% इन द लास्ट 3 इयर्स। तो लास्ट 3 इयर्स में भी अगर आप रिटर्न्स देखें तो 30% से ज्यादा है। और अगर हम बात करें लास्ट 10 साल में, एक डेकेड में ओवर इसका रिटर्न्स देखें तो इट वाज अराउंड 17%। अब हम देखते हैं कुछ फंडामेंटल्स रेशियोज इस फंड के क्या हैं। तो जैसे शार्प रेशियो होता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स टू स्टडी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। सो शार्प रेशियो इज डिसेंट एट अराउंड 1.7% एंड द बीटा इज आल्सो वेरी लो एट अराउंड 0.57। सो ये दोनों जो मेट्रिक्स हैं ये काफी इस फंड के अंडर कंट्रोल हैं, काफी कम है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द माय मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ अ फंड, दैट इज द फंड एलोकेशन। इसमें हम देखेंगे कि विच आर द टॉप सेक्टर्स दैट द फंड इज इन्वेस्टिंग इनटू, व्हाट आर इट्स टॉप होल्डिंग्स, कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या छोटी छोटी कंपनियां हैं जिसमें ये फंड इन्वेस्ट करती है। क्योंकि अदरवाइज अगर हमें ये नहीं पता होगा तो वी विल नॉट नो एज एन इन्वेस्टर विच डायरेक्शन एम आई गोइंग इनटू। अगर हमको पता होता है कि अंडरलाइंग थीम क्या है फंड का, सो देन वी कैन डू आवर ड्यू डिलिजेंस, वी कैन डू आवर ड्यू रिसर्च, वी कैन रीड द आर्टिकल्स, वी कैन रीड द न्यूज कि क्या हो रहा है इस क्षेत्र में, यू नो, इज द कंट्री गोइंग टू सक्सीड इन ऑल इट्स एंडिवर्स, या फिर कुछ ड्रॉबैक होने वाला है, ग्लोबली ऐसा क्या हो रहा है, कुछ हमारे कंट्री पे असर पड़ रहा है। In sharp contrast, I have covered another video on quantamental fund, वो आप देखें अगर, तो उसमें इन्वेस्टर को कोई हवा ही नहीं रहती है कि फंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। दो द फंड इज गिविंग गुड रिटर्न्स एंड इट्स ऑफर्स अ गुड मिक्स ऑफ मशीन लर्निंग एज वेल एज ह्यूमन इंटेलिजेंस, लेकिन अगर आपको ये आपका डायरेक्शन नहीं होगा तो आई डोंट नो एज एन इन्वेस्टर व्हाट आई एम गेटिंग इनटू। सो आई, इन माय व्यू, फॉर इन my personal investment style, I would want to know what the fund comprises of for me to go and put my money into. Otherwise I don't know what is going to happen, what is the fate of the fund, which direction is it going. अगर हमारे कंट्री में अलग हवा चल रही है, फंड अलग ही चल रहा है, तो क्या फायदा। So I feel it is important to know the overall allocations in your fund before you get into, बाकी आप समझदार हैं। अगर आप मार्केट कैप वाइज देखें तो द फंड हैज एक्सपोजर टू ऑल द 3 मार्केट कैप्स, दैट इज स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन दिस फंड इज दैट इट हैज द हाईएस्ट वेटेज, it has the highest weightage to small cap, in sharp contrast to many funds who focus generally a larger weightage on the large cap funds. So is fund mein, this is how it is differentiating from the other infrastructure mutual funds, that it is focusing on the small cap funds. अब हम देखेंगे कि क्या है वो small cap funds and whether it makes sense for you to move forward in this fund or not. तो highest weightage of around 38% towards small cap fund, and also अगर आप दूसरे हर जैसे और सारे इंफ्रा फंड्स में एलोकेशन है, तो इस फंड में भी जो हाईएस्ट एलोकेशन है सब सेक्टर्स में वो है टुवर्ड्स कैपिटल गुड्स, फॉलोड बाय कंस्ट्रक्शन, देन कम्स एनर्जी एंड देन कम मटेरियल्स। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इस फंड ने अच्छे से अपने मैंडेट को फॉलो किया है, अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को फॉलो किया है। क्यों? क्योंकि द फंड इज एन इंफ्रा फोकस्ड फंड। तो इंफ्रा में ये मेजर हमारे यही 3-4 सब सेक्टर्स आ जाते हैं, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से ये फंड अच्छे से अपने मैंडेट को फॉलो कर रहा है, अगेन इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू मेनी अदर फंड्स, infra funds having exposure to financials like ICICI or others like telecom. तो अब now let's see the other interesting part of this fund. तो जो इस fund की second और third largest holdings है, those are towards Gujarat State Petronet as well as KEI Industries, which are focusing on the energy as well as electrical industry components in the overall fund. So these are not large cap companies. These are not large cap companies, and the highest allocation, as always, is towards L&T. So L&T is the largest holding of this fund, which is like many other infra funds in India that I have seen. But the second and the third allocation is not towards large cap, but it is towards others like Gujarat State Petronet as well as KEI Industries. अगर अब हम बात करें जो दूसरे और इनके allocation holding देखें, तो जो इसके next is company की holdings है, that is towards PNC Infratech as well as KNR Constructions. तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये small cap companies है. These comprise of the top 10 holdings of the overall funds. So this shows the fund manager's interest, you know, कि सारे holdings हमको large cap में ही नहीं डालने. We can also try and look for other better performing companies in this overall space. And also another intriguing factor which I found in this particular fund is कि इसकी जो exposure
एक्सपोजर है इट इज नॉट टुवर्ड्स बिगर लार्जर एमएनसी कंपनीज ऑफ द लाइक्स ऑफ एबीबी हो गया, कमिंस हो गया या सीमेंस हो गया, बल्कि ये इन्होंने ज्यादा अपने देसी कंपनीज पे फोकस किया है ऑफ द लाइक्स ऑफ गेल एंड पावर ग्रिड. सो दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग एज वेल एज अ वेरी क्यूरियस पॉइंट टू फोकस ऑन कि अदर देन फोकसिंग ऑन द एमएनसीज, हमारा इस फंड ने हमारे go local, this is going local and it's focusing on the Indian desi PSU companies like GAIL and Power Grid. तो जो overall holdings है इस fund में, it is around 37 stocks and also the the AUM of the fund is around 500 crores, which is okay-ish if you consider the other infra funds existing. मतलब it will not go into a liquidity crunch or anything because there are other funds with lower AUM sizes. So इस तरह से अगर आप देखें तो ये सब केटर हो जाता है. अब अगर हम फोकस करें इसके एक्सपेंस रेशियो पे, तो जो एक्सपेंस रेशियो है इट इज अराउंड 2.44% इफ यू गो फॉर अ नॉर्मल प्लान. लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्लान चाह रहे हैं तो इसमें आपका थोड़ा कम हो जाता है एक्सपेंस रेशियो. लेकिन अगर आप कंपेयर करें इसको क्वांट के फंड्स हैं उसमें जो एक्सपेंस रेशियो है इट कम्स टू अराउंड 0.56%. तो अगर आप देखो कितना डिफरेंस होता है, तो इंडिया हैज टू ड्रास्टिकली रिड्यूस दिस गैप. अगर आप और फंड्स बाहर वाले देखें तो उसमें आप जैसे क्वांटी अगर हम देख लें तो उसमें 0.56% है डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो. अगर आप उसको हमारे इन्वेस्को के इंफ्रा फंड से कंपेयर करें तो इट कम्स टू अराउंड 2.44%. तो अगर आप सोच रहे हो आप इंफ्रा इन्वेस्को में डालो पैसे, तो यहाँ 2% का तो आपको ऐसे ही रिटर्न में आपके फर्क आ गया. तो ये आप देखो, ये बड़ा एक दिस इज नॉट अ वेरी गुड पॉइंट व्हेन वी कंसीडर इन्वेस्टिंग इनटू दिस इन्वेस्को इंफ्रा फंड, क्योंकि इसमें आप इसका जो एक्सपेंस रेशियो है इट्स वेरी हाई इन अ नॉर्मल प्लान. देयर इज आल्सो एन एग्जिट लोड फॉर लेस देन अ ईयर विच अगेन आई डोंट अप्रूव ऑफ. तो यहाँ पे भी एक ये सेटबैक होता है. तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये फंड का जो इट इज एन ओवर ओकेश फंड अगर आप वैसे देखें, क्योंकि it has not differentiated, it is not bad I'm saying, but it has not differentiated itself from the others. अगर आप इसके positives देखें तो अब आप हम इसको positive देख सकते हैं क्योंकि it is an interesting holding है. fund manager और भी he is focusing on the overall growth story in India and not just stock picking the large cap companies but also seeing the potential of the other small and mid cap companies in our country. But it can also go the other way around. Also जो इसके expense, it is a very expensive fund क्योंकि इस expense ratio भी बहुत high है, ऊपर से exit load भी लगता है इस केस में. तो इस तरह से आप देखें तो इसके कॉस्ट काफी ज्यादा हैं. रिटर्न्स आर गुड if you want to see, returns are really good. But again, that is the case for normal case for other infra funds that is operating in this sector. अगर आप overall PEP भी देखें तो वो भी काफी high हो जाता है. But again, it is because of the holdings, the companies जो हमारी top holdings है, because of the high valuations given currently in our country, तो ये PEP भी automatically high side में हो जाता है. तो if you're interested, I would suggest look for other infra mutual funds to invest in. I have already made several videos on different AMCs having an infra exposure, the link of which is now flashing on your screen. So kindly have a look if interested. So that was all from my side. I hope you like my video. I hope to see you again. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और also share it with others. I'm new to this platform, so please show me some love. So for subscribing, just click on this green globe. ये जो green globe आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर आप क्लिक करें and you will be a subscriber. So that was all from my side. Thank you and have a nice day. Bye.